Good morning, dear students. I, Dr. Bharat Goyal, faculty from GSS DGS Khalsa College, Patiala. Today I am in front of you to deliver a lecture on the subject field theory, which is mostly quoted in the syllabus of MSc Mathematics second year in all the Indian universities. In this lecture we will talk about just only the preliminary concepts which we required further in this course. Preliminary concepts before reaching to the concept of field. I here suppose that you all are aware of the basic concepts of the algebra, that is groups and rings and integral domains and ideals. So I will here start from the preliminary first concept, that is irreducible element. Now what is a irreducible element in a integral domain? So the definition is a non-zero element of an integral domain R with unity is called an irreducible element. Number one, it is not a unit element. Firstly, it should not be a unit element. That means it does not have a multiplicative inverse. Secondly, every divisor of A is improper. Means if you say A is equals to B into C for any two elements B and C of the ring R, then either B or C is a unit. Means either B or C should be a invertible element. So I repeat, ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट, सबसे पहले वो एलिमेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो. उसको हम इररेड्यूसिबल एलिमेंट कब बोलेंगे? फर्स्टली दैट एलिमेंट शुड बी नॉट ए यूनिट. वो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता. और सेकेंडली, उस एलिमेंट को अगर हम किसी दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं तो उन दोनों में से कोई ना कोई एक एलिमेंट या बी और या फिर सी क्या होना चाहिए? एक यूनिट एलिमेंट होना चाहिए. सो ये तो थी डेफिनेशन इररेड्यूसिबल एलिमेंट. नाउ माय नेक्स्ट डेफिनेशन इज द प्राइम एलिमेंट. नेक्स्ट डेफिनेशन इज द प्राइम एलिमेंट. So the definition of prime elements just differ from the definition of irreducible element in the second condition only. Firstly, that element again should be a non-zero element of an integral domain R with unity, and that element is called a now P element, or you say prime element. Firstly, the same condition, it should not be a unit. But the second condition is, if this element, let us suppose the prime element, now here we denote it by P. If this element is denoted by P, then if P divides A into B for some A and B belongs to R, then we must have either P divides A or P divides B. Then the element P is said to be a prime element of the ring integral domain R with unity. So now what is the relation between the irreducible elements and the prime elements? We will discuss in the next question that what is their relation. So firstly I will quote the relation. The relation is every prime element is irreducible element. Every prime element is irreducible element. But every irreducible element is not a prime element. If we have only the integral domain R with unity. And now the question arises, when irreducible element changes to a prime element? So we will discuss all these concepts in this video. So firstly, I put every prime element is irreducible element. Now, why every irreducible element is not a prime element? Firstly, I will talk about an example of an integral domain with unity in which an irreducible element is not a prime element. I said every prime element is
irreducible element, but converse is not true. That means every irreducible element is not a prime element. Why it is so? Let us quote an example. This is a ring, an integral domain with unity z under root of -5. It is defined like this. This is a plus b under root -5, where a and b both are integers. a और b दोनों के दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो है, लीनियर कॉम्बिनेशन में एलिमेंट्स जो हैं वो इसको बिलोंग करेंगे z अंडर रूट -5. अब इस रिंग में से मैं एक एलिमेंट चूज करता हूं 3 बिलोंगिंग टू z अंडर रूट -5. Obviously you can say this is the element of ring because 3 can be written like this: 3 plus 0 under root -5. You can say this is your a, this is your b, which are both are integers. So 3 belongs to z under root -5. Now we shall check that 3 is a irreducible element but not a prime element. How it is so? Suppose, according to the definition of irreducible elements, 3 को हम अगर कोई दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, a प्लस बी अंडर रूट -5, c प्लस बी अंडर रूट ऑफ -5, तो इन दोनों में से मैं प्रूफ कर दूंगा कोई ना कोई एक एलिमेंट क्या आएगा? यूनिट आएगा. और z अंडर रूट -5 जो रिंग है, इसके यूनिट एलिमेंट्स होते हैं +-1. These are the unit elements of z अंडर रूट ऑफ -5. सो हम अब 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 को हमने सपोज दो के प्रोडक्ट में लिख लिया, a प्लस बी अंडर रूट -5 और c प्लस डी अंडर रूट ऑफ -5. सो इन दोनों में से मुझे एक नंबर को प्रूव करना है कि या तो ये वाला एलिमेंट यूनिट है या फिर ये वाला एलिमेंट जो है वो यूनिट है. मींस दोनों में से किसी एक की वैल्यू जो है वो +-1 जरूर आएगी ही आएगी. और कैसे इसको चेक करेंगे? सो फर्स्टली we shall take the conjugates on both sides. You all are aware of the conjugates. So here we do not have any under root of -5. So here the conjugate of 3 remains same, 3. And here it will be a minus b under root of -5. And here c plus d under c minus b under root of -5. Now multiplying these two equations, we will get 3 into 3. It will be equal to the product of these two. It will become a square plus 5b square. And the product of these two becomes c square plus 5d square. यहाँ पे क्या है? 3 into 3 means it is 9. अब 9 को दोनों की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है. अब क्या है? a b क्या थे हमारे पास? इंटीजर्स. सिमिलरली c और d भी क्या थे हमारे पास? इंटीजर्स. सो ऑब्वियसली दीज टू नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स. a square plus 5b square and c square plus 5d square both are integers. But to write 9 in the product of integers, there are only two possible ways to write 9 in the product of two pair of integers. Firstly, the 9 is 3 into 3, and secondly the 9 is 9 into 1. So if we compare 3 into 3 with these two terms, a square plus 5b square and c square plus 5d square, you will get a square plus 5b square equal to 3 and c square plus 5d square equal to 3. And you can easily observe that because a, b, c, d are integers, there is no integer solution of these equations. A square plus 5b square is equals to 3 and c square plus 5d square is equal to 3. There is no integer solution of these two equations. If we choose b equal to 0, then
there is no value of a which belongs to z such that a square equal to 3. Similarly here, so we cannot select this pair. The only option is 9 into 1. So this option is wrong. So we have to choose a square plus 5b square equal to 9 and c square plus 5d square is equal to 1. Or you can revert it, a square plus 5b square equal to 1, c square plus 5d square is equal to 9. Then it is possible. Now, what are the possible values of now a, b, c, d? So, if one of the value is equals to 1, in this case c square plus 5d square equal to 1, and in this case a square plus 5b square equal to 1. Again, because a, b, c, d are integers, so we must have here d is equal to 0 and c is equal to plus minus 1. Or in this case, we must have b equal to 0 or a equal to plus minus 1. Then it is possible. So if we choose this case, then we will get c plus d under root of minus 5 is equals to plus minus 1. And if we choose this case, then a plus b under root minus 5, this is equal to plus minus 1. So if we adopt this case, then c plus d root minus 5 is a unit. And if we adopt this case, then a plus b root minus 5 is a unit. So in both the cases, we observe that one of the elements which we write as a product 3 is equals to a plus, ये हमने पहले लिखा था. So इन दोनों में से एक एलिमेंट जो है वो यूनिट आ गया, या ये वाला एलिमेंट यूनिट आ गया या ये वाला एलिमेंट यूनिट आ गया. So इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है वो क्या है, एक इररेड्यूसिबल एलिमेंट. So अभी आगे बात करेंगे कि 3 इररेड्यूसिबल तो है, बट अब चेक करेंगे क्या 3 प्राइम भी है. तो इसके लिए अगेन मैं इसी एलिमेंट को, क्योंकि ये हम सब भली भांति जानते हैं 3 डिवाइड्स 9, चाहे रिंग z है चाहे रिंग z अंडर रूट माइनस 5 है. अब क्या है, अगर 9 है, 9 को अगर मैं इस तरह की प्रोडक्ट में लिखूं, क्योंकि रिंग हमारे पास z अंडर रूट माइनस 5 है, तो इसको हम इस तरह की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं. आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि क्या बनेगा, 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, दैट विल 2 स्क्वायर प्लस 5 b स्क्वायर मीन्स 1, मीन्स ये कितना बनेगा, हमारे पास 9 बनेगा. सो 3 डिवाइड्स 9 मीन्स 3 इन दोनों की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है. और प्राइम नंबर की क्या कंडीशन थी, अगर दोनों की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो किसी एक को वो जरूर डिवाइड करे, या a को डिवाइड करे या b को डिवाइड करे. ना तो ये a को डिवाइड करता है और ना ये b को डिवाइड करता है. a और b मीन्स ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया. तो अभी कैसे चेक करना है कि ये a और b दोनों को डिवाइड नहीं करता. तो इसके लिए हम इसको कंट्रेरी वर्जन में प्रूव करेंगे. सपोज कर लेते हैं कि a अगर 3 जो है, अगर सपोज डिवाइड करता है 2 प्लस रूट माइनस 5 को. सो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ डिविजिबिलिटी, देयर एग्जिस्ट a quotient a plus b root minus 5 belonging to z under root of minus 5 such that 2 plus root minus 5 is equals to 3 into a plus b under root of minus 5. This is the criteria of divisibility which we have taught in the lower classes also. So again, by comparing the values, we will get 2 is equal to 3a and 3b is equals to 1. Here we have compared the real, you can say real and imaginary parts. So 3a is equal to 2 and 3b is equals to 1. But you will find here that neither a is an integer nor b is an integer for these kind of values. The value of a will be 2 by 3, which is not an integer. And the value of b is 1 by 3, which is again not an integer. So neither the value of a is an integer nor the value of b is an integer. So how a plus b root minus 5 belongs to z root minus 5? How it belongs? So our supposition is wrong. 3 does not divide 2 plus root minus 5. Similarly, you can check for 2 minus root minus 5. Just here to replace the plus sign with a negative sign.
So again, here it will be this 3a is equal to 2, and here we have 3b equal to minus 1 and b equal to minus 1 by 3. Again, both of them are not integers. So 3 neither divides 2 plus root minus 5, and 3 nor divides 2 minus root minus 5. So 3 is not a prime element. But we have observed earlier that 3 is an irreducible element. So every irreducible element is not a prime element. So I promise you in the starting that I will also tell the condition when every irreducible becomes a prime element. So for that kind of concept, you will need not only the integral domains with unity, but you will need the concept of principal ideal domains, which you say in short form PID, principal ideal domain. So now what is the concept of principal ideal domain? A commutative integral domain R with unity is said to be principal ideal domain if every non-zero ideal of R is of the form generated by a single element AR. We also say that such kind of ideals are the principal ideals. That means that integral domain is said to be a principal ideal domain whose every ideal is a principal ideal. जिसका हर एक आइडियल जो है प्रिंसिपल आइडियल होगा, ऐसी कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी क्या कही जाएगी? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. और द कॉन्सेप्ट अब ये क्या बन गया है हमारे पास, हमने पढ़ा था कि प्राइम एलिमेंट जो है वो इररेड्यूसिबल तो होता है हमेशा. एवरी प्राइम एलिमेंट इज इररेड्यूसिबल एलिमेंट. बट जो कन्वर्स था वो हमने पढ़ा कि वो ट्रू नहीं था अगर सिर्फ इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी होगी. तो अब कॉन्सेप्ट को इसको मैं रिवाइज करने जा रहा हूं कि ये कन्वर्स जो है ये भी सही रहेगा, बट द कंडीशन इज यू डज नॉट नीड, यू नीड अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. अगर आर हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो हर एक इररेड्यूसिबल एलिमेंट जो है वो प्राइम एलिमेंट भी जरूर बनेगा ही बनेगा. तो ये था प्राइम एलिमेंट्स और इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएफडी के बारे में, यूक्लिडियन डोमेन के बारे में, just the preliminary concepts in the next video. So then we move to our syllabus of this course, the field theory. Firstly, we will discuss in the next videos only the preliminary concepts. So till then, thank you very much.